Good evening, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So let's wait for 3-4 minutes and then we'll start. Thank you.
Good evening, everyone. So let's start with our session. Can you hear me? Yes, sir. Okay, so let's start. So in previous session, we discussed about artificial neural network and we understood the theory of ANN, that how ANN work, and we learned that it has input layer, hidden layer, and output layer, and we can add as many hidden layer as we want. And through forward and backward propagation, it performs some learning. Before the start of this session, I will ask some questions so that everyone should be on the same page. So in previous session, we learned about artificial neural network. Can anybody tell me what is the meaning of epoch? What is epoch? The number of times the iterations will be done. What do you mean by iteration? Like running the same test case forward backward propagation. You can say. Yeah, so one cycle of forward and backward propagation called as epoch. And during epoch, actually model fine tune their weights. So this is the point which we have learned in our last session. Okay, next question. What is the total number of neuron in hidden layer? So how we decide? So let's first discuss how we decide the number of neuron in input layer. How we decide the number of neurons in input layer. So it's equal to number of features. Yeah, so in input layer, the number of neuron is equal to the number of features which we want to process. And what is the number of neuron in output layer? Depends on the number of outputs we have. Yeah, so it depends upon the number of outputs. Can anybody, someone else tell me how we decide the number of neuron in output layer? In case of regression, what is the number? It depends upon number of classes. Case of progression 1. So in case of regression, it is 1, and in case of classification, it is equal to the number of classes we have, and in case of binary classification, we have only one output attribute. This is what we have discussed. And what is the rule for finding the number of nodes in hidden layer? And number of nodes at input plus output divided by 2. Yeah, so it is average number of input plus output number of nodes. So that way we decide about hidden layers. And we also discussed about different activation function which perform the output. So we discussed that a neuron actually perform all its operation in 3 steps. So can anybody tell me what are these 3 steps? So neuron actually perform 3 important steps. What is the first, second, and third step? So anyone, please tell me what is first step. First step performed by neuron. So neuron actually perform processing in 3 steps, and in first step it simply multiply inputs with the weights. So this is the first step, and it perform summations for all the nodes. So this is the first step. What is the second step? Activation functions. Activation. On this output, we apply activation function. And what is the third step? That Sarosic mode. Gradient descent. In third step, we simply send this output to the next connected nodes.
So these are the three steps. In third step, we just have the output. And in this particular case, we have in second step, we apply different activation function. Can anybody tell me what possible activation function we have? Threshold functions. Sigmoid, Sigmoid. ReLU, transform. So we discussed multiple Threshold function. activation function. One is threshold, which produces the output in 0 and 1. It is a binary output. Similarly, we have a sigmoid activation function, which is also produce a binary output, Sir, but it is Logarithmic function भी बोलते हैं इसको. yes. So it is little bit more smooth curve produced by sigmoid, which is very commonly used activation function for output layer, particularly for binary classifier. Then we have ReLU and TANH activation function, and based on our requirement, we have to use one of the activation function. So in this session, we are going to implement the code of artificial neural network, and here I am considering a code. I am considering a data set to predict whether it is actually a customer churn data set, where I want to predict that whether the customer will exit my bank in near future or not. So I have different input parameters, and based on that input parameter, I am predicting whether the customer is most probably going to switch from my bank to another bank. So this problem is called as customer churning, where we want to identify those important customers to whom we should focus a little bit more, so that they should not switch from one service provider to another service provider. Here we have a class attribute exit, where you can see that if it is 1, it means that most probably this customer, from historical data, we know that these customer has exit from our bank. So based on that, we can predict that whether a customer is going to exit from our bank or not in near future. So if our model predict that customer is most probably going to exit from the bank, then our you can say marketing team will contact them and give them multiple you can say coupons or different options, so that they should not exit from our bank. So this is our idea, that we have a historical data from our customer, and from the historical data we know that what are the customers who have exited from our bank in our near past, and based on that we want to train our model so that it can predict in future what are the customers most probably going to exit from our bank. And if we know that, it will be very useful for us. We can make a team of marketing person which can target those customers so that they should not exit in near future. So this is our idea. So here, can you tell me if this is a class attribute? So this is a case of classification, or this is a case of regression? Classification. And this is the case of binary classification, where we just have to predict 0 or 1, and all these are our input attributes. So you can see that we have all these our input attributes. So from this customer ID to this. So from these input attributes, our first task will be to identify that what attribute we should consider and what attribute we should ignore. So let's suppose if these are our input attributes. So just give a look at their column headings and try to identify which columns are not important, and we should ignore those columns during building our model. So can you tell me a few columns which are not important in this prediction? Anyone, you can unmute and tell me which columns are not important. Surname and customer ID. So customer ID is first column. Is it important or not in predicting whether the customer? So this is not important column because this is just a ID. Surname of the customer. Not important. No, No. Credit score. Yes. Important. this Yes, is sir. important. Then this geography. Yes, sir.
gender, age, balance, number of product, has card, is active member, time. So all these are important attributes. So we will ignore customer ID and surname, but we will be considering all other input attributes. From all these input attributes, what kind of pre-processing we need to apply? So actually, this is the whole. This data set will give you a opportunity to revise all the concept which we have discussed in this particular course. So what kind of pre-processing is required in order to process this? First of all, you know that these two columns are not important, so we will not going to select these. But do we need some kind of pre-processing for this data set, or is it already okay? So what kind of pre-processing we need to apply in this data set? Yes, please. बोलिए. You can unmute. What kind of pre-processing is required? No idea. Categorical. कौन सा एट्रीब्यूट कैटेगोरिकल है? Geography and gender. तो क्या करोगे? जेंडर के लिए क्या करोगे आप? 0, 1, 0. कौन सी इनकोडिंग करोगे? बोलिए सब. तो जेंडर के लिए कौन सी इनकोडिंग करोगे? कोई बताएगा? लेबल एंड कोडिंग. लेबल इनकोडिंग, वेरी गुड. और जियोग्राफी के लिए कौन सी इनकोडिंग करोगे? Label. इसके लिए भी लेबल. वन हॉट एनकोड. सो लेबल जियोग्राफी के लिए आपको वन हॉट इनकोडिंग करनी है, बिकॉज देयर आर मोर देन वन क्लासेस व्हिच आर पॉसिबल. यू कैन सी हियर फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, और भी बहुत सारी क्लासेस आ सकती हैं इसमें. सो ऑफ कोर्स यू नीड मल्टीपल लेबल इनकोडिंग इन दिस. सो वन हॉट इनकोडिंग आपको करनी पड़ेगी जियोग्राफी पे, और आपको जेंडर के लिए लेबल इनकोडिंग करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आपको कोई और काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग करनी है कि चले जाएगा काम आप? Do you need any other type of pre-processing, or is it okay? Standardization. हाँ जी. Standardization. Why standardization is required? scaling. So scaling करनी पड़ेगी, feature scaling. Why feature scaling is required? Can anybody tell me? Why feature scaling is required? Because some attributes have very low magnitude while others have very high. Yeah, so you can clearly see that the value of some magnitudes attributes are very low, like tenure, number of product, has card. So these are 1 to single digit values, while you can see that this last column is of 4 or 5 digits. Even this credit score is 3 digits. So it's better to have feature scaling with that. So once you have feature scale data, then it will be available for building our artificial neural network. And you know that in artificial neural network, we have to create input layer, hidden layer, output layer. We have to mention activation function, and then we have to perform forward and backward propagations. We have to compile our model. So we require a different library to build our artificial neural network. So first of all, we will be discussing what type of libraries is required whenever you So you have muted yourself. So whenever we have to build a artificial neural network, we have a library called as Keras. This is actually a high-level API which works on the top of TensorFlow or Theano, and it was developed to
reduce the size of the code and it make everything very simple and easy to implement. So we have to import this Keras library, which works on the top of TensorFlow. So first of all, you need to import or you need to install this library on your Spider environment, because by default it is not available. So you have to first of all install this library in your Spider environment. So once this Keras library is available, then you can implement any convolutional neural network, recurrent neural network, or simple artificial neural network. So this is the library which we are going to use today. And this is very important library for deep learning. It allow easy and fast prototype, and it supports both CNN and recurrent neural network as well as artificial neural network. And the good thing is that it can work on both CPU as well as on GPU. So this is the important library which we will be using, and we will be importing it in later stages. So let's first perform data pre-processing before implementing artificial neural network, because before building artificial neural network, we have to select our desirable input attribute. Then we have to perform some kind of label encoding, one-hot encoding, and feature scaling. And then we will be building artificial neural network. So in order to perform all data pre-processing, you know that we have to import NumPy, Matplotlib, or Pandas. So we have imported all those traditional libraries. This is our data set, which I have already discussed. So we are reading this data set. It is available in this CSV file, churn-modeling.csv file, and I am reading this in data set. So once I have this in a data frame data set, what will be the next step? Can anybody tell me? So once I have this, what is the next step in code? Code में अब क्या करेंगे? So split in X and Y. So we will create X and Y. So can you write the code for creating X? So let's suppose this is our data set. तो X कैसे create होगा? तो इसकी index value लिखें अगर, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So these are our attributes. तो 0 से लेके 12 तक ये एट्रीब्यूट हमें मिलते हैं, और हमें कस्टमर आईडी और जो सरनेम है वो सिलेक्ट नहीं करना. तो हमें सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से शुरू करना है और सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन. सो लेट्स डू दिस. So you can see that we are selecting from third. Okay, actually this is also included in this row number. Index value ये है ना, row number भी इसका part है. So ये number यहाँ से शुरू हो रहा है 0 1 2 3. So we have to start from 3. So 3 से लेके 13 तक हमने select किए. 13 of course is not included. This is the upper bound, and this create X, and I have selected last column in Y. So these are my X and Y. You can see that this is X, where I have credit score to this, and all these attributes will be in X, and in Y I have a final class attribute that is 0 and 1. So let's suppose I have this X, and for this I have selected column from starting point 3, because again I am repeating, because row number is also present in the data set. When I run, I will show it. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. So we have to start from credit score whose number is 3. So that's why we select 3 through 13, and last column is Y. So next, you know that we have to apply label encoder over gender column. And you know that for this we have label encoder class which we need to import, and then we have to apply this on column number 0 1 2. तो X के सेकेंड कॉलम के ऊपर मुझे लेबल इनकोडिंग लगाना है, और X के फर्स्ट कॉलम के ऊपर मुझे वन हॉट इनकोडिंग लगानी है. सो यू नाउ नो दैट इंडेक्स वैल्यू इन X, तो X के सेकेंड के ऊपर लेबल इनकोडिंग और X के फर्स्ट के ऊपर हमें one hot encoding lagani hai. So in order to apply label encoding over Xender, so we are simply importing this label encoder from pre-processing and creating a object of this. And here you can see that I'm specifying index value 2, and then I am updating my X. So this X will be updated and X will be converted into 0 and this second attribute will be converted to 0 and 1. Female 0 ho jayega, male 1 ho jayega. So this way
we have converted this gender into label encoding. If anyone have doubt in this, you can ask me any question. So you can see that we have applied label encoding on column at index value 2 in X. Now you know that हमें नंबर 1 के ऊपर वन हॉट इनकोडिंग लगानी है. किसी को याद है क्या करना पड़ेगा वन हॉट इनकोडर के लिए? कुछ थोड़ा बहुत याद है किसी को? How we can apply one hot encoding over column number 1? Yes, please. Anyone? So for this, this is the code. You know that I have imported one hot encoder from pre-processing, and we have a column transformer. हमने पहले भी इसको यूज किया हुआ है, which is available in compose of sklearn. और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में हम इनकोडर स्पेसिफाई कर रहे हैं, वन हॉट इनकोडर, और कॉलम का इंडेक्स वैल्यू दे रहा हूँ 1 और रिमाइंडर बता रहा हूँ पास थ्रू. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिमाइंडर पास थ्रू? किसी को कोई याद हो इसका मतलब क्या था? Other columns won't be affected by this code. It's only the column that I have passed would be transformed. यस, सो इसका मतलब है कि जो आप कॉलम दे रहे हैं वो तो ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, लेकिन जो बाकी के कॉलम है वो पास थ्रू हो जाएंगे एज सच. तो अदरवाइज रिमाइंडर अगर पास थ्रू नहीं करेंगे आप, तो जो बाकी के कॉलम है वो आपको नहीं मिलेंगे. आपको चाहिए इसके ऊपर तो ट्रांसफार्मर अप्लाई हो और जो बाकी के कॉलम है वो एज सच पास थ्रू हो जाए विदाउट अप्लाइंग एनी इनकोडर ओवर दिस. सो रिमाइंडर पास थ्रू मतलब दीज रिमेनिंग कॉलम विल बी पास थ्रू एज सच विदाउट अप्लाइंग एनी इनकोडर, while you will be applying encoder one hot encoder on column at index value 1. So you are specifying that कि column index value 1 के ऊपर encoder one hot अप्लाई करो और जो बाकी कॉलम है उनको as such पास कर दो. तो अगर आप पास थ्रू नहीं करेंगे, रिमाइंडर को पास थ्रू नहीं लिखेंगे, तो जो बाकी कॉलम है वो आपके पास नहीं होंगे, सिर्फ आपको सिर्फ एक कॉलम मिलेगा. लेकिन you want all other column also in the output in X, so you are using this remainder equal to pass through. So then we are applying this fit transform over this. Finally, we are updating X for all these values. So you can see that here X has been updated, and then if you print the value of X, you can see that ये आपके जो वैल्यू है वन हॉट इनकोडिंग लग गई है आपकी जियोग्राफी के ऊपर. 3 पॉसिबल वैल्यूज थी, 0, 1, 2, और ये आपका है जेंडर कॉलम, और ये आपके बाकी के जो भी कॉलम थे वो सारे अवेलेबल हैं. और जो टोटल कॉलम है वो ये आपके 0 से लेके 11 तक है. 3 नए कॉलम इंट्रोड्यूस हुए हैं. दिस इज ड्यू टू वन हॉट इनकोडिंग. वन हॉट इनकोडिंग में एक और स्टेप करना पड़ता था. कोई बताएगा क्या करते थे हम वन हॉट इनकोडिंग में? एक इश्यू होता था वन हॉट इनकोडिंग में और उसको सॉल्व करने के लिए एक और स्टेप किया जाता था. व्हाट इज दिस वन हॉट इनकोडिंग में? डमी ट्रैप. Yes, so we have to solve the problem of dummy trap, and dummy trap में क्या करते थे हम? So फर्स्ट वाला कॉलम ड्रॉप कर देते थे. So जो फर्स्ट कॉलम है उसको ड्रॉप कर देते थे because we can predict the value of third from remaining 2. So यही हम कर रहे हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डमी ट्रैप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और X में मैं बाकी के सारे कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट. सो इंडेक्स वैल्यू 0 जो है वो ड्रॉप कर दी गई है, और इसके बाद आपको जो X में कॉलम है अभी तक जो 12 मिल रहे थे 0 से 11 तक थे, उसमें ये फर्स्ट कॉलम ड्रॉप हो जाएगा और अल्टीमेटली यू हैव ओनली फाइनल 11 कॉलम्स इन योर X. सो दिस इज द points which we are doing. So again I am repeating. So first of all we are just using our traditional libraries. Then we are loading the data set, selecting a desirable column in X and Y. Then we have to apply label encoding over gender. So here we are applying it over gender. Then we are applying one hot encoding over geography. So here we are specifying column at index value 1. We are applying encoder one hot encoder. And then here we are solving the problem of dummy trap. So finally, when data set is available, then we are just splitting the data between training and testing. You know that this code very well. So we are just importing train test split by specifying test side as 20%. So this is our now final data.
And finally, we are applying feature scaling over this, and we are using standard scaler. We are using fit transform over training and testing, and we have created a feature scaled data set. And this is our final feature scaled data set, which is shown here. So let's do all these tasks practically in Python also. So this is my code. So here I have this customer churning modeling CSV file. So I will be using this CSV file to build my model. So let's go at the top. So here we are importing all the libraries. So we have imported. So let's create a data frame for data set. So this is the data set which we have. So I'm showing you the content. You can see we have a row number as a part of this data set, customer ID, surname, credit score. So there is a geography and gender, and finally you have this class attribute. So we are creating X and Y. So we have created X. So this is 0, this is 1. So 1 में 1 hot encoding लगानी है और 2 के ऊपर मुझे लेबल encoding करनी है. So ये हम लेबल encoding और 1 hot encoding का कोड है. तो लेबल इनकोडर का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसको कॉलम नंबर 2 पे अप्लाई कर रहा हूं. तो अभी लेबल इनकोडिंग करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं. तो लेबल इनकोडिंग एक्स पे अप्लाई हो गई और आप देखिए कि ये फीमेल 0 में कन्वर्ट हो गए, मेल 1 में कन्वर्ट हो गए. तो लेबल इनकोडिंग नंबर 2 पे अप्लाई कर दी. नंबर 1 पे हमें 1 हॉट इनकोडिंग अप्लाई करनी है. तो इसके लिए कॉलम ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं और इसको मैं फिट कर रहा हूं. सो लेट्स एग्जीक्यूट दीज टू कमांड्स. सो ये हमारा एक्स जो है वो चेंज हो गया. तो 3 हमारे पास डमी एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं और ये बाकी के कॉलम वैसे ही हैं. तो अब मेरे पास इस समय 12 कॉलम है एक्स में. यू कैन सी एक्स में टोटल 12 कॉलम्स है और इसमें मेरे पास 10,000 रोज है. तो इन 12 कॉलम में से मुझे ये फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है डमी ट्रैप को सॉल्व करने के लिए. सो यहाँ पे आप देखिए एक्स में मैं सारी रो सिलेक्ट कर रहा हूँ और कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू 1. तो एक कॉलम ड्रॉप हो गया. तो एक्स में आप अब यहाँ चेक कीजिए सिर्फ 11 एट्रीब्यूट रह गए हैं. तो ये एक्स मेरा बना और एक्स के 11 इनपुट एट्रीब्यूट है. बट स्टिल द डेटा इज इन डिफरेंट स्केल्स. तो फीचर स्केलिंग करनी है. तो अगले स्टेप में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं. उसके बाद मैं इसको फीचर स्केल कर रहा हूँ. तो आप देखिए जो एक्स ट्रेन है वो हमारा फीचर स्केल हो चुका है. एंड इन एक्स आई हैव 0 to 10 11 इनपुट एट्रीब्यूट्स और ये फाइनली वाई ट्रेन में मेरे पास फाइनल क्लास एट्रीब्यूट है 0 और 1. सो जितनी भी प्री प्रोसेसिंग थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली है. अब हमारा अगला काम है कैरस को इंपोर्ट करना और अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना. नाउ यू नो दैट अब यहाँ पे हमें बेसिक क्लासिफायर लगाने होते हैं लाइक decision tree or random forest. So you can simply apply this on xtrain and xtest. Same way अब वहां पे decision tree, random forest या SVM लगाने की बजाय we can apply artificial neural network. But artificial neural network important is Keras. So we are here. You can see that importing Keras, and in Keras I have two important further classes. One is sequential class and another is dense class. So let's import this first of all. So I am importing Keras and importing its two classes. One is sequential, as indicates it is used to build the model, and dense is used to add the layers. तो मॉडल बिल्डिंग के लिए sequential class है और layers ऐड करने के लिए input layer, hidden layer, output layer, उसके लिए मेरे पास dense class है. तो वापस चलते हैं कोड के ऊपर और फिर वापस आएंगे. इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट, you can ask me any question. तो बढ़िया है. अब हम वापस चलते हैं और कोड देखते हैं. तो फीचर स्केलिंग हो चुकी थी और अब हमें अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना था. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव टू यूज कैरस, सीक्वेंशियल एंड डेंस. सीक्वेंशियल मॉडल बिल्ड करने के लिए और डेंस लेयर्स ऐड करने के लिए. सो सीक्वेंशियल अलाउ यू टू क्रिएट मॉडल्स लेयर बाय लेयर
while dense is used to add layers. So sequential class है, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने. So जो sequential class है उसका ऑब्जेक्ट क्लासीफायर है, तो अब जो भी कुछ होगा इसी क्लासीफायर के थ्रू हम करेंगे. So here we have create a classifier which will be used to add layers. So अब classifier object बन चुका था. अब इस classifier object में एक method है add, which is used to add layers. और add layer करने के लिए हम dense class को use करते हैं. So now try to focus properly because we are discussing very important concept of artificial neural network and now we are going to implement it through this dense method. तो classifier में इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी लेयर ANN में ऐड करनी है तो हम इसका ऐड मेथड यूज कर रहे हैं और ऐड मेथड विल मेक ए यूज ऑफ डेंस क्लास. और हियर वी हैव टू सप्लाई 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. सो दीज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स चेक द नेम ऑफ दीज पैरामीटर्स. वैल्यूज मैंने अभी नहीं लिखी, वैल्यूज मैं आपकी हेल्प से लिखूंगा इसमें, लेकिन अभी मैं सिर्फ पैरामीटर्स के नाम बता रहा हूँ. सो डेंस में एक पैरामीटर है यूनिट्स. So, दूसरा पैरामीटर है कर्नल इनिशियलाइजेशन, तीसरा है एक्टिवेशन और चौथा है इनपुट डिम. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास ये फर्स्ट हम जो लेयर ऐड कर रहे हैं, अभी जो इस यूनिट को कॉल कर रहा हूं, ये दो काम करेगा. ये मेरी इनपुट लेयर और फर्स्ट हिडन लेयर दोनों ऐड कर देगा. सो क्या ऐड करने वाला है, ये मेरे लिए इनपुट लेयर ऐड करेगा और फर्स्ट हिडन लेयर ऐड करेगा. सो दिस विल बी एडिंग इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर. अब इनपुट लेयर के ऊपर कितने मुझे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्रिएट करने हैं, पहले तो ये मुझे बताओ कि इनपुट लेयर पे हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए इस एग्जांपल में. कैन एनीबॉडी टेल मी? और आप चैट बॉक्स यूज कीजिए, इट्स बेटर. एंड सेंड मी द नंबर कि यहाँ पे इनपुट लेयर पे कितने न्यूरॉन होने चाहिए. नाउ यू नो द एग्जांपल, यू नो द डेटा सेट. सो दिस इज माय फाइनल डेटा सेट वी हैव. सो ये था डेटा सेट, 0 हमने इसमें रिमूव कर दिया है. सो ये डेटा सेट है. तो कितने मुझे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इस पे रखने चाहिए इनपुट लेयर पे. You can use chat box to send me the answer. So yes, so we are getting responses. Very good. तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आप मुझे बता रहे हो 11 हमें यूज करने चाहिए इनपुट लेयर के लिए. वेरी गुड. तो जब मैं हिडन लेयर में इनपुट के 11 यूज करने हैं, वेरी ट्रू, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट 1 से लेके 11 है, तो 11 इनपुट एट्रीब्यूट्स है, तो 11 मुझे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनपुट लेयर के लिए क्रिएट करने हैं. हिडन लेयर के लिए कितने रखें? अब चैट बॉक्स यूज करके मुझे हिडन लेयर के बताइए, हिडन लेयर पे कितने होने चाहिए. सो हिडन लेयर के लिए आप मुझे आंसर भेज रहे हैं और सभी भेज रहे हो आंसर 6 का. क्यों 6? क्योंकि इस यू नो दैट हिडन लेयर में हमारे पास होते हैं इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइडेड बाय 2. तो इनपुट के लिए 11 हमने देख लिए. आउटपुट के लिए कितने चाहिए? क्योंकि ये बाइनरी क्लासीफायर है तो आउटपुट के लिए 1 चाहिए, तो 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाय 2. हिडन लेयर के लिए मुझे चाहिए 6. सो वेरी गुड. सो आपने सोच लिया कि हमें हिडन लेयर के लिए 6 नंबर ऑफ न्यूरॉन चाहिए, 6 जो न्यूरॉन 6 नोड चाहिए, और इनपुट के लिए आपको 11 चाहिए. वेरी गुड. और जो अब जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो आपका हिडन लेयर पे अप्लाई होगा. तो हिडन लेयर के ऊपर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हम कॉमनली अप्लाई करते हैं, अगर थोड़ा सोच के बता पाए कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हमें लगाना चाहिए. सो यू आर सेइंग दैट कि रेलू हमें हिडन लेयर पे लगाना चाहिए. और आउटपुट पे कौन सा लगेगा? अगर मुझे आउटपुट का टेक्स्ट पे भेज पाए आप. यस, तो आउटपुट बाइनरी है तो आउटपुट के लिए सिग्मॉइड लगाएंगे और हिडन लेयर पे रेलू से ट्राई कर सकते हैं. सो वेरी गुड. सो लेट्स डिफाइन ऑल दीज थिंग्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमने पूरी थ्योरी में पढ़ा है उसको सिंपल हम यहाँ पे इस एक लाइन के कोड में implement करने वाले हैं. So this is the beauty of this Keras library because you can do everything just with a single one line of code.
So all these are important. So unit is used to define number of nodes in hidden layer. तो अब मैं एक एक करके रिवील कर रहा हूँ हर एक का पर्पस क्या है. So unit is used to define number of nodes in the hidden layer, and now you know that कि units की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. So typically number of nodes in hidden layer is equal to number of input plus output divided by 2. इस एग्जांपल में मुझे 6 चाहिए, तो यूनिट्स की वैल्यू 6 होगी, ये मैंने यहाँ लिख दी. Now next parameter is kernel initialization. So kernel initialization का मतलब है कि आपके जो वेट है वो कहाँ से इनिशियलाइज होंगे. सो नॉर्मली हम जो वेट्स हैं वो अर्लियर 0 इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियल रैंडम इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है. तो इसके लिए हमारे पास एक वैल्यू है यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म, अगर कर्नल इनिशियलाइजेशन यूनिफॉर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल इनिशियलाइज द वेट रैंडमली वेरी स्मॉल विच इज क्लोज टू 0, and this apply a uniform weight to all my nodes. So kernel initialization uniform का मतलब है कि आप जो weights हैं उनको close to 0 randomly initialize कर रहे हैं, तो ये weights की initialization करने का काम करेगा. तो इसका नाम भी ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है, kernel initialization, कि आपके जो weights हैं उनकी initialization हो रही है, and we are just using uniform which indicates that we are assigning a small value close to 0 and we are uniformly assigning it to this. तो सेकंड पैरामीटर भी यूनिफॉर्म डाल दिया. तीसरा एक्टिवेशन फंक्शन है जो ये बताता है कि हिडन लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है. सो यू नो दैट, आपने आंसर मुझे बता ही दिया था कि हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करने वाले हैं. और इनपुट डायमेंशन आपको एज द नेम इंडिकेट इट विल टेल यू नंबर ऑफ नोड्स इन द इनपुट लेयर. तो इसका नंबर आपको पता है कि 11 है, तो इस एग्जाम्पल के लिए 11 था. So finally you have this single line of code, और इस single line of code से आपने 2 layers एक तरह से ऐड कर ली, input layer और first hidden layer. So input layer में आपके पास 11 न्यूरॉन थे. यूनिट्स का मतलब है एक्चुअली हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन है, कर्नल यूनिफॉर्म इनिशियलाइज कर रहे हो और एक्टिवेशन फंक्शन आपने रेलू दिया है. सो दिस इज सिंपल वन लाइन कोड व्हिच इज यूज्ड टू ऐड ए input layer and first hidden layer. So here you can see that I have written, just give me a minute. Yeah, so this is adding input layer and first hidden layer. किसी को इसमें कोई डाउट हो, you can ask me any question. So this is very simple one line code which can solve this problem. Good. So now next add a second layer. So in order to add second layer again we have to just repeat this code. इसी code को copy paste करना है और इसके लिए again add है dense class है which is used to add layers. तो इसमें अगली hidden layers के लिए आप units बताओगे, kernel initialization बताओगे, activation बताओगे, और यहाँ पे जो input dim है वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेयर बाय लेयर काम कर रहा है. फर्स्ट हिडन लेयर हमने डिफाइन कर दी है, ये आपकी इनपुट लेयर थी, ये आपकी फर्स्ट हिडन लेयर थी. अब इसके अगली सेकंड हिडन लेयर है. तो अब वहां तक आपको बताना जरूरी था कि इसमें फर्स्ट के बाद फर्स्ट हिडन लेयर में कितने हैं. अब जो सेकंड हिडन लेयर है, है उसकी इनपुट है फर्स्ट हिडन लेयर. तो यहां पे इनपुट जो थी ये वेरिएबल है, ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगी. यहां पे जो इनपुट थी वो डेटा पे डिपेंड करनी थी, इसलिए वहां पे इनपुट स्पेसिफाई करना कंपल्सरी था फर्स्ट लेयर के लिए. अगर आप फर्स्ट लेयर को देखें तो फर्स्ट लेयर के लिए इनपुट डेटा पे डिपेंड करनी थी, तो बताना जरूरी था कि भाई 11 इनपुट एट्रीब्यूट है या 6 है या 5 है या कितने हैं. तो इसलिए वहां पे हमने इनपुट डेम में बताया कि मेरे पास 11 है. लेकिन इस केस में जो सेकंड हिडन लेयर है उसकी जो इनपुट है वो फर्स्ट हिडन लेयर से आ रही है. एंड न्यूरल नेटवर्क नो दैट कि फर्स्ट हिडन लेयर में क्या था, क्योंकि उसने ऑलरेडी फर्स्ट हिडन लेयर पिछले स्टेप में बिल्ड की है. तो यहां पे अब आपको इनपुट लेयर का साइज बताना कंपल्सरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली. अब अगर आप थर्ड लेयर ऐड करोगे तो थर्ड की जो इनपुट है वो सेकेंड लेयर है, तो थर्ड को पता है कि सेकेंड लेयर में क्या था. तो इसलिए अब आगे आगे इनपुट पास करना आपके लिए ऑप्शनल है, या आपको पास नहीं करना. ऑटोमेटिकली न्यूरल नेटवर्क विल टेक दैट वैल्यू फ्रॉम द मॉडल. सो हमें सिर्फ 3 चीजें अब बतानी है, यूनिट्स, कर्नल इनिशियलाइजेशन एंड एक्टिवेशन, एंड यू नो देयर वैल्यूज. सो यूनिट्स आपने कैलकुलेट ऑलरेडी किए हुए थे, 6 है. कर्नल इनिशियलाइजेशन यूनिफॉर्म है
और अगली हिडन लेयर के ऊपर भी हम रेलू लगाना चाहते हैं, बट अदरवाइज यू कैन प्ले विद दीज नंबर, बट इट्स सजेस्टेड टू यूज सेम एक्टिवेशन फंक्शन एंड सेम नंबर ऑफ यूनिट्स in each case. So I hope that you got my point that कि हमें second layer के लिए जो input size है वो बताने की जरूरत नहीं है, and we already know that कि second layer में भी 6 hidden layers में न्यूरॉन है, यूनिफॉर्म है और एक्टिवेशन रेलू है. तो आप अगर थर्ड लेयर ऐड करनी है तो जस्ट कॉपी पेस्ट इट, ये थर्ड लेयर ऐड कर देगी. एक और लेयर ऐड करनी है जस्ट कॉपी पेस्ट इट, चौथी लेयर ऐड हो जाएगी, अगेन एक और करनी है. तो जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे उतनी हिडन लेयर्स ये ऐड होती जाएगी. एंड इन दिस एग्जांपल आई हैव जस्ट एडेड 2 हिडन लेयर्स, बट इफ यू वांट टू ऐड मोर हिडन लेयर्स you can simply repeat this line of code, and for second layer, third layer and so on, you don't need any input size because model sequence में काम कर रहे हैं और मॉडल को पता है कि अब आउटपुट कहां से आ रही है. If you have any doubt in this, you can ask me any question. Okay, very good. Now can you tell me final code है हमारा आउटपुट लेयर के लिए, तो आउटपुट लेयर में हमें क्या वैल्यूज देनी होंगी? So if you can tell me the values for output layer. You can use chat box. तो यूनिट्स कितने होंगे चैट बॉक्स पे? Yes. So unit will be 1 and activation will be sigmoid. Sigmoid. Very good. So remaining code will be same. So you can see for output layer I am using unit 1, kernel initialization uniform and activation sigmoid. So this will add my output layer. So इससे जो मेरा मॉडल है वो बिल्ट हो जाएगा. और अगर आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस के लिए आ जाएंगे. तो यहाँ पे सिर्फ बाइनरी क्लासिफायर था तो मैंने 1 यूनिट दिया है, बट इफ यू आर बिल्डिंग ए मल्टी क्लास क्लासिफायर देन यूनिट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस. And in that case, you will be using an activation function called as softmax. So you can write down that name also. We are discussing it first time. So activation function softmax is used in case of multi-class classification because softmax जो है ये आपको multiple probabilities provide करता है और multiple values देता है, और जिसकी highest probability होती है उसको ये as a class predict करता है. So this is what we want. तो जो softmax है it produce multiple values and which is equal to number of classes, and in this case it select the class which has the highest probability of prediction. So softmax can take care about multiple classes. Units multi class में number of आपकी classes आ जाएंगी, बाकी कोड आपका सेम है. So इस तरह से हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो बिल्ट हो जाएगा. So once you built the network, अभी मॉडल बिल्ट हुआ है, आपने इसको ऐसे बना लिया कि ये इनपुट लेयर है, देन यू हैव हिडन लेयर, फिर 2 हिडन लेयर है लेट्स सपोज, एंड देन फाइनली वी हैव आउटपुट लेयर. सो वी हैव बिल्ट आवर नेटवर्क. सो वंस नेटवर्क इज बिल्ट, अब हमें उसको यू कैन से कंपाइल करना है. कंपाइल करने का मतलब है अभी तो हमने मॉडल डिजाइन किया है, मतलब बता दिया कि ये इसका डिजाइन है, बट अभी हमें कुछ और बताना पड़ेगा कि जो फाइनल ट्रेनिंग है वो कैसे होगी इसकी, क्योंकि फाइनल ट्रेनिंग में अल्टीमेटली जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन यूज करेगा, और फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपेगेशन यूज करते समय इसको जो एरर है उसको मिनिमाइज करना है, और एरर को मिनिमाइज करते समय इसको वेट्स अपने जो है उनको फाइन ट्यून करना है. सो यू नो दैट कि हमें ये अब अगला काम करना है. सो वी हैव जस्ट डिजाइन द मॉडल, बट विल बी द नेक्स्ट टेस्ट है कि मॉडल फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपेगेट करेगा. ड्यूरिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपेगेशन उसको एक एरर जो है कॉस्ट फंक्शन का उसको मिनिमाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको वेट्स को फाइन ट्यून करना है. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वेट की फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं? Which algo we use to change the weights? You can use, yes, so we use gradient descent. तो अब हमें बताना है उसको कि भाई कौन सा एल्गो यूज करना है वेट की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए. तो कंपाइलेशन में वी विल बी टेलिंग कि विच एल्गो यू विल बी यूजिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन, एंड हाउ यू will be calculating the errors, because
एरर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी कई सारे तरीके हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है या सिंपल सम ऑफ स्क्वायर एरर है. सो यू हैव टू मेंशन कि कौन सा एरर कैलकुलेट करोगे, कौन सा एरर मेजरिंग टेक्निक फॉलो करोगे और कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे अपने मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए या वेट्स को फाइन ट्यून करने के लिए. एंड वी विल आल्सो बी टेलिंग कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किन पैरामीटर्स पे की जाएगी. जो ऑप्टिमाइजेशन है वो प्रिसीजन पे की जाएगी या ऑप्टिमाइजेशन रिकॉल पे की जाएगी या ऑप्टिमाइजेशन ओवरऑल एक्यूरेसी पे की जाएगी. सो यू हैव टू मेंशन मैट्रिक्स ऑन विच यू विल बी डूइंग ऑप्टिमाइजेशन. किसकी वैल्यू ऑप्टिमाइज करोगे, आप मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहते हो, एक्यूरेसी की, प्रिसीजन की, रिकॉल की, और आप जो वेट है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे. सो ये सारी चीजें हम कंपाइलेशन ऑफ ANN के में हम बताएंगे. तो इन नेक्स्ट स्टेप compiling of ANN, after designing the model I will be telling which algo I will be using for optimizing the weight, how I will be calculating my error, and what kind of metric I will be used for optimization of my model, accuracy, precision, recall. So what metric I will be using. So for this, so let's discuss the code of that. So here you can see that in compilation we have to pass these attributes. So here I am using compile method, or in compile method I have to specify optimizer, loss and matrix. तो तीन चीजें हैं जो मैंने आपको बताई. ऑप्टिमाइजर बताएगा कि आप कौन सा एल्गो यूज करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट जैसे है. फिर लॉस कि आप जो लॉस फंक्शन है वो कौन सा यूज करोगे, सम ऑफ स्क्वायर एरर यूज करोगे. और मैट्रिक्स कि आप एक्यूरेसी को करना चाहते हो, प्रिसीजन को करना चाहते हो, रिकॉल को करना चाहते हो, या मोर देन वन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो. सो हियर वी आर स्पेसिफाइंग ऑल दीज, एंड इन दिस केस आई एम स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमाइजर एज एड, बिकॉज जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, इट इज इंप्लीमेंटेड इन ए ऑप्टिमाइजर कॉल्ड एज एडम. तो एडम में हमने इस एल्गो को इंप्लीमेंट किया हुआ है. तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम इज इंप्लीमेंटेड in a optimizer called as Adam. So we are just mentioning Adam because we want to use gradient descent. तो जब जब आप gradient descent use करेंगे आपका optimizer Adam होगा. Loss. So यहाँ पे हम जो loss है logarithmic loss use कर रहे हैं, और ये binary cross entropy है. Binary इसलिए है क्योंकि binary classifier है, और cross entropy basically ये जो लॉगरिथमिक लॉस कैलकुलेट करेगा बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज. यहाँ पे ये चीज नोट करनी जरूरी है कि अगर आपका बाइनरी की बजाय मल्टी क्लास मॉडल है तो फिर आप लॉस स्पेसिफाई करोगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट लॉसेस, वन इज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड सेकंड इज कैटेगोरिकल cross entropy. So if you are building binary classifier, you will use binary cross entropy. If you are building multi-class, then you will be using categorical class entropy. And in metric, you have to tell which metric you will be using. And here we are providing the name in the list. So here you can specify more than one also. But in this case, I am only specifying accuracy, but you can also specify precision and recall also. But here I am building it on the basis of accuracy. So this is a one-line code which is used to tell my model that, okay, I am optimizing the weights on the basis of stochastic gradient descent. We have to minimize our loss as binary cross entropy. If it is a multi-class, it will be categorical class entropy, and the metric accuracy is the metric which I am interested in. So this is a compile, and it is again a one line of code which helps to compile my model. तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी भी ट्रेनिंग हमने नहीं की. पहले स्टेप में मैंने मॉडल डिजाइन किया कि इनपुट बताई, हिडन लेयर लगा दी, आउटपुट लगा दी. तो मॉडल डिजाइनिंग के बाद हमने, अब मॉडल डिजाइन करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने बता दिया कि हमारा जो ऑप्टिमाइजर है वो कौन सा है, एरर कौन सा मिनिमाइज करना है, और कौन से मेट्रिक में मैं इंटरेस्टेड हूं. सो अब हमने सब बता दिया. अब थर्ड स्टेप में मैं एक्चुअल फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन करूंगा. तो जो थर्ड स्टेप है
उसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं फिटिंग द मॉडल। सो जब मॉडल फिट होगा तब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेट करेगा। और इस फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेट करते समय मुझे क्या बताना चाहिए, कैन एनीबॉडी टेल मी? अब जब मैं एक्चुअल फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेट करूंगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच आई शुड मेंशन? epochs. Yes. So in third step, when you fit the model on the training data, of course आपको बताना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग डाटा पे फिट करेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहेगा वो रहेगा इपॉक। तो कितनी बार आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेट होगा वो इपॉक है। और नॉर्मली जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेट करेंगे तो कुछ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को एक साथ बैच में प्रोसेस करेंगे। सो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास नॉन्स आर रिकॉर्ड है, एक एक रिकॉर्ड को हम फॉरवर्ड प्रोपिगेट बैकवर्ड प्रोपिगेट करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो वी विल मेक बैचेस ऑफ रिकॉर्ड एंड इन वन बैच हियर आई एम कंसिडरिंग 10 रिकॉर्ड्स। तो 10 रिकॉर्ड को एक साथ एक वेट के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेट करेगा। तो बैच साइज बता रहे हैं कि भाई जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो कितने बैचेस में आपने डिवाइड करने हैं, और एक्चुअली 10 बैचेस में डिवाइड होंगे। बैच साइज इट विल क्रिएट 10 डिफरेंट बैचेस। तो टोटल अगर आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है तो फिर 1,000 के बैच बनेंगे। और इपॉक बताएंगे कि कितनी बार ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेट करेगा। एंड ऑफ कोर्स इसकी जो ट्रेनिंग है वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे की जाएगी। एंड फॉर दिस आई हैव मेथड कॉल्ड एज फिट। तो फिट मेथड जो है ये एक्चुअल ट्रेनिंग इसकी परफॉर्म करेगा, और इसके थ्रू जो मॉडल है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपिगेट करेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हेन यू रन दिस कोड तो ये इपॉक्स रन हो रहे हैं। तो अभी ये 4th इपॉक है, ये 5th इपॉक है, टोटल 100 इपॉक तक ये चलेगा। और हर रन के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है वो आगे से इंप्रूव होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग एंड लॉस इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो ये चलता जाएगा। और फाइनली जब आप पूरा मॉडल ट्रेन कर लेंगे तो आप यहाँ देखिए कि जो लॉस है वो पहले से कम हो गया। पिछली स्लाइड में मेरा लॉस है 41 5वें इपॉक पे। तो जब आप 34 इपॉक पहुंचे आपका लॉस हो गया 0.40। एक्यूरेसी आपकी है 0.834 एट इपॉक नंबर 37। 8340 थी 8 के ऊपर। सो एक्यूरेसी इज continuously improving. You can check this number, and loss is continuously decreasing. And finally, this is my overall loss. तो इस तरह से ये आपको propagate करके आपको finally जो model की predictions है वो देगा. So let's go back to our code and see how we will be doing this. So we will be doing this very slowly, and please try to follow the code, and you can unmute yourself if you have any doubt. So here you know that we have already you can say feature scale of model pre-processing has been performed. So now we are importing chars, importing a class sequential, and importing class dense. So everything has been imported. Creating objects for sequential class. So classifier है, सब कुछ इसी के थ्रू होगा. So here I am adding my first input layer and first hidden layer. तो पहली input layer और पहली hidden layer लगा रहा हूँ. Input में 6 यूनिट्स है और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है. इनपुट में 11 है और इनिशियलाइजेशन मैंने यूनिफॉर्म किया है. सो लेट्स ऐड फर्स्ट हिडन लेयर. सिंपल कोड है, एग्जीक्यूट हुआ, एक हिडन लेयर ऐड हो गई. और लेट्स ऐड सेकंड हिडन लेयर. सेकंड हिडन लेयर में भी सेम यूनिट, सेम कर्नल इनिशियलाइजेशन है, सेम एक्टिवेशन फंक्शन है, लेकिन इनपुट डिम मुझे नहीं बतानी क्योंकि मॉडल को पता है कि उसको फर्स्ट हिडन लेयर से मिल रही है. तो सिर्फ 2 ही हिडन लेयर बनाई है. अगर थर्ड चाहते हैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट इट, इट विल ऐड थर्ड लेयर आल्सो. देन फाइनल आउटपुट लेयर, यूनिट्स 1, कर्नल, यूनिफॉर्म और एक्टिवेशन सिग्मॉइड. तो ये आउटपुट भी आ गई. तो मॉडल डिजाइन हो गया. तो इट्स सो सिंपल, जस्ट विद 3 लाइंस ऑफ कोड वी हैव डिजाइन्ड आवर ANN मॉडल. This is the power of Keras. Then we have to compile. During compilation, we have to specify that I am using Adam optimizer, which is actually implementation of stochastic gradient descent. We are specifying binary cross entropy as a loss and metric as accuracy. So compilation में मैंने अपने parameter करके बता दिए. And then here is the actual training happen. So classify dot fit batch size. टोटल 10 बैचेस में ये सारे रिकॉर्ड्स को डिवाइड करेगा ट्रेनिंग के.
तो अगर मेरे पास ट्रेनिंग में 2000 रिकॉर्ड हैं तो 10 में जाएंगे तो एक में 200 रिकॉर्ड आएंगे। और इपॉक, तो इपॉक यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं ट्रेनिंग को जल्दी करने के लिए। मैं जहाँ पे जस्ट 10 epoch बता रहा हूँ, but you can play with this number, and here I am just training my model for 10 epochs. So let's execute this code. So you will see that के मॉडल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है epoch 1 by 1. So ये second epoch पे ये लॉस है और ये उसकी एक्यूरेसी है. And after every epoch, if you continuously monitor all these values, you will realize that your loss is decreasing and accuracy is increasing at every step. So you are this now कितने epoch तक रन करना चाहिए, ये अब important question है. This is a case of performance tuning. So you have to find out appropriate number of epoch. You have to find out appropriate number of batch size, which give you ideal situation for training the model. So यहाँ तक मैंने सिर्फ 10 epoch तक रन किया है और मुझे मॉडल की एक्यूरेसी 83% मिल चुकी है और मॉडल मेरा ट्रेन हो चुका है. सो बस यहाँ तक ही था इसका जो स्पेशल है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का. बाकी जो स्टेप है वो अब अगेन सेम है जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में यूज करते थे. सो नाउ आई विल बी गिविंग दिस मॉडल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन ऑन टेस्ट डेटा. सो मैं टेस्ट डेटा पे इसको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ और ये मुझे वाई प्रिडिक्ट रिटर्न करेगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड चेक वाई प्रिडिक्ट. सो ये आपका है एक्स टेस्ट, सॉरी वाई टेस्ट चाहिए था ना. सो दिस इज माय वाई टेस्ट एंड दिस इज माय वाई प्रिडिक्ट. सो हियर यू कैन सी दैट जो वाई प्रिडिक्ट है आपका वो प्रोबेबिलिटीज में है. सो बिकॉज हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया था आउटपुट लेयर के लिए? हाँ जी, sigmoid. 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 So that you know that sigmoid will produce the output in the range of 0 to 1. तो वो 0 to 1 की रेंज में वैल्यू दे रहा है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटीज दे रहा है. तो 0.24, 0.35, 0.07, 0.61. So all these are the probabilities. So it is not giving you the output in term of 0 and 1. It is giving you the output in term of probability. अब आपको इस y predict को इस y टेस्ट के साथ कंपेयर करना है इन ऑर्डर टू बिल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स. बट कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो तभी बिल्ड होगा जब दोनों की डाटा टाइप सेम होगी. यहाँ पे ये बाइनरी है बट यहाँ पे ये फ्लोट है, तो मुझे इस फ्लोट वैल्यू को y predict को 0-1 में कन्वर्ट करना है. एंड यू नो दैट इसके लिए हम थ्रेशोल्ड यूज करते थे कि मैं ऐसे बोल देता हूं कि अगर y predict की वैल्यू 0.5 से कम है तो इसको 0 में मैप कर दो और अगर इसकी वैल्यू 5 से अबव है तो इसको 1 में कन्वर्ट कर दो. So for this, I can simply compare this value in my next step of code. You can now understand why I'm doing this, because my y predict is actually in number float, which giving me the probability between 0 to 1, but I want it in binary form, true false. So that's why here I'm sigmoid की जो भी output आएगी उसको threshold से compare करना है. So y predict greater than 0.5 है अगर तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू का मतलब y predict में 1 जाएगा और अगर लेस देन हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. सो हियर आई एम सिंपली स्पेसिफाइंग ए कंडीशन एंड दिस कंडीशन रिटर्न ए बाइनरी वैल्यू 0 and 1 based on the outcome. So if the output is true, if condition is true, it will return true in y predict, otherwise it will return false. So y predict automatically converted to binary by just comparing the value of y predict with 0.5. Again, I am repeating, at present, this is y predict, but I want to make it true and false. So for this, I will be comparing first value with 0.5. If it is less than 0.5, it will be false. If it is more than 0.5, it will be true, so that it can convert it to 0 and 1. So here I am comparing its value with 0.5, and then I am updating my y predict accordingly. So let's execute this. Y predict has been updated and now you can see that you have false and true. So ये भी binary में है और y test भी binary में है. तो अब मैं confusion matrix बना सकता हूँ. पांचवा मेरी सेम प्रिडिक्शन है, फर्स्ट की प्रिडिक्शन गलत है, आठवीं की प्रिडिक्शन गलत है. सो माय प्रिडिक्शंस आर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज आई हैव ओनली ट्रेन्ड अप टू 10 epoch, but if you train up to 100-200 epochs, your accuracy will be much better. So this is the point. So ये confusion matrix अब बनाने के लिए तैयार है. So now you can see I am just creating the confusion matrix by using my earlier code.
सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मेथड इंपोर्ट कर रहा हूँ, y टेस्ट y प्रिडिक्ट अब दे रहा हूँ और ये मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे देगा और ये अब मेरे पास CM में आ गया होगा। सो एक वेरिएबल बन गया CM। Yeah, so we have this. So this is confusion matrix and now you know that इसमें क्या true positive है, false positive है और कितनी accuracy है. So ultimately, how many wrong predictions I have? Can anybody tell me? Wrong predictions कितनी है? 320. So 280. 320. 286 plus 34, it is 320. 320 a wrong prediction out of all the prediction which my model has made. So this is the same concept. So now you can apply precision, recall, and all those things. So you know all the remaining steps. So this is all about implementation of ANN. So here we have successfully implemented ANN by first pre-processing our model. So this initial code is about coding the model. We have selected X and Y. Then we performed label encoding and one-hot encoding on my desirable columns. Then performed training, split, and fitting the model. So these steps will be same if you have to build any classifier. The only difference here, in case of ANN, you have to import carriers. Then you have to add input layer, hidden layer, second hidden layer, and output layer. So model has been designed. Then you have to compile, and then you have to perform training. X train, Y train by using fit method. You have to specify batch size and you have to specify epoch. Once model is fit, then you can use your model for making predictions. But your predictions will be in 0 to 1 range because we have used sigmoid. So we need to convert it into, we have to compare its value with threshold to convert it into true and false. So we have performed this task. And then finally, you can build your confusion matrix and you can check your output. And this way, we have our final output in our desirable format. So this is the implementation of ANN. If you have any doubt, you can ask me any question. What is 800 by 800 here in the output? Pardon? Sir, what is 800 by 800 here when it is training? 800 by 800. I think it is number of records in each batch, maybe. So, ये number of records होंगे. I think it is number of records maybe in each batch because we have 5 batches और उसको उसने किया होगा 40. So maybe it is according to that. But we mentioned 10 batch now. Number of records in each batch. Number of records in each batch. I have to cross check, but I think that most probably it will be number of records in each batch you have. So any other question? So good. So it was, as I have already told you, this is our, now I'm going to stop my sharing. So as I have already told you, this will be our last session. So we have completed a good milestone. और इसमें हमने पूरा जो machine learning के जितने भी classifiers हैं, we have completed it. So I hope that now you are able to apply any kind of pre-processing over any data set. Where you know that how to apply label encoding, one-hot encoding, how to select X and Y. And you also know that how to train a data set on a model by using different classifiers. So we have learned all important classifiers starting from logistic regression to support vector machine, base. Now we have discussed the ANN model, and we have also completed our discussion on regression. So we learn how to use simple linear regression, multiple linear regression, and polynomial linear regression. So with this, you have a basic foundation where you can apply your machine learning on any data set. You can further extend that knowledge. So if you have any question, you can ask me anything about at this
Yes, anyone? So today we have how many participants? So please be in the meeting, don't leave it. So we have 51 participants. So now it is a time where we are winding up, and it is a time for Guru Dakshina. So it's very important to keep this movement alive. और जो भी आपने सीखा है आप इसको एक्सटेंड करें और आगे भी ये मैसेज पास करें और बाकी जो और आपके पास वाले हैं उनको इन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग दें. This is the only purpose of our course, that you can spread this message and you can train more number of people. So you have now trained on these concepts. Now it's your responsibility to spread this knowledge to other people. So if you are a teacher, you can conduct workshops on your own college or institute so that you can pass this message. If you are a student, you can join a society, and then through your society you can train your juniors on these things which you have learned, because people struggle a lot to learn these concepts in a simplified way. So this is a platform where we have trained you to spread this message to your students, to your friends, and please take this opportunity and extend it forward to other members of the community. At this point, I want to I have a formal question for you. So now we are doing a little bit different. Just give me a minute to set everything. Okay, so I have a questions for you. Let me share this on chat box. So please join this. Also share this. So we have 25 on YouTube. So everyone please join this link. We will be discussing something for a few minutes and then we will wind up. So please bear with me for another 10 minutes. Visiting. So please share the link in the chat box. Just a minute. Yeah. So we have 50 participants. If you want
a break for 2 minutes, it's okay to take that break. So I will ask, you can take a break for 2 minutes and then please join, because we are concluding and we will be discussing our next plan of this particular series of courses. So please join, keep joining this meeting, don't leave, because it's very important. And you can have a break for 1 minute or 2 minutes and then please join back. So I'm waiting for you. So I'm going to share the link again. Yes, you can use this link. So everyone, please answer this question. So let me share my screen with you so that you can also. So now you can see my screen. So we have how many participants? 68 now. Good. So my question is very simple. Are you satisfied with the progress of India so far? So we have 69 responses now. 42 say yes and 27 say no. So still we have majority yes this time. Good. So this is the common question which I asked to my students, and I want to know what they think about this. And this time we have 71 and it is 42 and 29. Okay, so now I'm posing you another question. Rate the progress of India in scale of 1 to 10. So here you will be inputting a number, and this will be aggregated anyway. So I will be hiding my screen so that you should not influence by the vote of others. So you have to rate our score of India in the scale of 10. Please everyone participate. We have 53, 54, 55. Good. So overall score is 6.4, which is a good score. फर्स्ट डिवीजन आ गई हमारे देश की. And if you go back, so here we have 43 and 30. Good. And here we have a score of 6.3. Okay, this is my third question. यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं. What is the most important challenge and urgent problem that need to be solved for progress of our motherland? So you have to type it. So you can type anything in this. So let's see आपने क्या लिखा है.
So these are 34, 36 responses. So you can see the responses are education, poverty, corruption, employment, jobs, global warming. So I hope you can clearly see that the major highlighted problems from this group is corruption, poverty, education, and then you have listed population and unemployment or employment. So these are your concern. Of course, poverty, corruption, and education, these are the three important areas everyone is talking about, and you are equally worried about population and education also. It's very important to give a thought about those things which are equally important in our life. It's not only about machine learning जो हमें आगे लेके जाएगा. It's very important that we should be sincere to the society in which we are living, and that is actually the whole crux which can make the difference in our life and to the life of the people to whom we are associated with. So this is the reason that why I am discussing these points with you in the end of this session, because we have started this course with an objective that it's very important to train the people irrespective of their background. We make this course open to all the students, whether they are studying in a college or not, whether they belong to a city or not, whether whatever may be their level of education. And we try to deliver the content in such a way that so that everyone from different background can understand this concept very easily. So through this journey, what I feel that we started, you know that जब हमने शुरू किया था initially, so I have approximate 3,000 you can say registration. तो 3,000 registration से हमने शुरू किया था, which is very exciting number. But when we started our first session, then we thought कि हम इसको कैसे run करेंगे. So because in our Zoom, we have a limit of only 300 students, but we have lot more students. So instead of putting energy on selecting the students, we just make it open for everyone. So we send the invitation to all 3,000 students. And out of 3,000 students, I think that in first session, approximately 700, 800 students come up. और उसमें से जो फाइनल अटेंडेंस मेरे पास आई थी, मुझे लगता है 1,000 के पास आई थी पहले दिन, लेकिन मुझे लगता है 700-800 स्टूडेंट जो थे वो एक्चुअली उस सेशन में प्रेजेंट थे. ग्रेजुअली जब हम सेकंड सेशन तक पहुंचे, थर्ड सेशन तक पहुंचे, तो नंबर स्टार्ट ड्रॉपिंग, एंड नाउ यू कैन सी दैट इन द एंड ऑफ होल कोर्स वी हैव 67 पार्टिसिपेंट्स. तो जो जहां से हमने शुरू किया था उसके 10% हमारे पास फाइनल एंड तक रहे. तो हमने अगर 670 से शुरू किया था तो 67 तक हम जा पाए. एंड इट्स वेरी नेचुरल. दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन ऑल द कोर्सेज व्हिच आई रन इन दिस वे. नॉर्मली it has a 10% of course completion, but of course we have to work to increase that percentage, because lot of efforts and energy has been spent in this particular course. So it is important that we should have more number of students who should complete a particular course. But still, I'm happy that we have we able to achieve that minimum threshold of 10%. Of course, every time we want to have more number of completion, but still we have 10%. And the good thing which I find from that particular team, I'm asking this question every time whenever I have students in my class and everything. But normally ये जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, आर यू सेटिस्फाइड विद प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सो फार आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आंसर नॉर्मली रिवर्स होता है. Most of the people are not satisfied with the progress, and a lot of people जो नो की वोट है वो बहुत ज्यादा होती है. Sometimes 70% people are not satisfied and only 30 or 10% people are satisfied. But here in this group we have a different trend. Even जो स्कोर भी आपने दिया है, you gave a score of 6.3, which is much better as compared to other groups in which I have asked the same question, 6.3.
एंड जो आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है challenges का more or less it is same in every group. But here I want to make a comment. Here I am giving a thought why I have a very positive result from this group. There may be two possibilities. I don't know the exact answer. One thing is that a lot of students maybe from Thapar, they have already maybe participated in this question again, and they know that what I am going to discuss. So this may be the reason that most of the people has answered yes, because they may have already participated in the same discussion. Repeat हो रहे होंगे. Otherwise, अगर ये reason नहीं है, तो then I can think that this is a very positive, that if you are actually a winner. It shows your character. तो जिन्होंने ये course complete किया है, that is not easy to complete this course. कोई आपको credit नहीं मिल रहे, कोई आपको इसका जो certificate देंगे उसकी कितनी value होगी, we don't know. It's only your commitment which matters, and you have shown a very good commitment to come every week, and we even have two break up within the course. MST में भी हमने नहीं लगाई, EST के समय भी break था, but still you keep on attending all those sessions whenever we have these sessions. So it shows your level of commitment. It shows that you have something unique as compared to others, and that is also reflected in your thought process, that you are very positive, you are very optimistic, and that is reflected. I'm very happy that most of you are optimistic that what we have achieved so far after our independence, and you have given a very good score to the whole of points which we have discussed. I like to share my views on this topic little bit before winding up this session, and I hope you agree with me. So if I talk about the whole situation we have, then this picture can equate whole thing what we have so far. This is the journey so far. हमारा गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, and it all depend कि आप इसको कैसे देखते हैं. Most of the people say that कि हम कुछ नहीं किया, so they only focus on the empty part of the glass. But there is another group of people which fulfill that yes, we have achieved a lot of good things. क्या हमने अचीव किया है उसको इंडिपेंडेंस के बाद? तो हमें अपनी प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए मेरा ये मानना है कि हमें हमारी जो प्रोग्रेस है उसको जो मापने का मापदंड है वो ये है कि हमने कहां से शुरू किया था. Then only we can decide where we have reached. You cannot simply compare your progress by comparing the progress of US or Europe or other countries, because every country has their own history. So it's very important to compare yourself. आप अपने आप से कंपेयर करके ही पता लगा सकते हैं कि आपने कितनी प्रोग्रेस की. और ऐसे ही हम अपने इंडिविजुअल करते हैं. आप खुद देखते हैं कि एक बच्चा गांव से आके कहाँ कितना अच्छा परफॉर्म करता है, और एक ऑलरेडी लेके पैदा हुआ है, और वो जस्ट उसका जो प्रोग्रेस का ग्राफ है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं. सो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को आंसर करते समय ये सोचना कि हमने शुरू कहाँ से किया था. So when we think about 1947, so जो उस समय की जो पिक्चर्स सबसे सामने हमारे पास आते हैं, these are not the pictures of happiness. These are the pictures that filled with the blood and sorrow. These are some of the few pictures which I have taken from the internet, and that shows the situation in which we was during 1947. आप देख सकते हैं कितने लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, और किस तरह से जो 1947 था, it was considered the largest human migration that was filled with blood and sorrow. दोनों तरफ से बहुत लोग मरे, और this was the situation from where we have started. These are the camps which were laid down during that time, or lot of pictures actually tell the story of that pain. और this is the scene which even depicted in Milkha Singh movie, और उसमें भी आप इसी तरह का ये scene depict किया गया था. So this is the actual picture, and that shows the mercy or the sorrow of the people from where we have started. Lot of people killed during that time. These are just facts and figures which we have obtained from the internet that that provide us the insights during what was happened during that time. 12 million people जो थे उन्होंने border cross किया. Approximate 3.4 million people was reported missing.
Punjab was most adversely affected regions, and there was a pool of blood and bodies all over different stations after communal rights which broke after 1947. So it was not that great picture from where we have started. So जब हमें अपनी progress को compare करना है, we should always think that from where we have started, and then we can reach to some conclusion. And I feel that we were blessed that during that time we have a great leader who take care about our nations in a best possible way. We were guided by the thoughts of Mahatma Gandhi ji, and during that time we have a prime minister as a Pandit Jawaharlal Nehru, which is considered as an architect of modern India. लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में हमने हर किसी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, महात्मा गांधी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया और नेहरू पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया. But it is very important to understand from the facts and figures that how we have progressed. You can see these numbers. So we have started Bhakra Dam in 1948, which was fully completed in 1963. So आजादी के एक साल के बाद ही हमने ये महसूस कर लिया कि energy requirement is so important, and just after 1 year of independence we have started building our Bhakra Dam. और आज की डेट में भी जितने भी पंजाब में, जितने भी नॉर्थ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, one of the major source is still Bhakra Dam. So you can understand the vision of those great people, those who have started creating that infrastructure just after independence, and they have built and completed this infrastructure just 15 years of our independence. In 1963 we have a Bhakra Dam, और आज की डेट में भी जितनी पावर हम दे रहे हैं वो उसी से ही ले रहे हैं. Just see the numbers, year of establishment, that give you clear idea. IIT खड़गपुर 1951 में बना दिया गया. IIT Bombay created in 1958, IIT Madras 1959, IIT Kanpur 1959 और IIT Delhi 1963 में. आजादी के 15 साल बाद हमने ये सारे टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन के खड़े कर दिए थे, और आज की डेट में भी हर अच्छे स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन है. हम सोच सकते हैं कि आज की सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन इनमें एक इस तरह का टेम्पल रेप्लिकेट नहीं कर पाई, बट दीज ग्रेट पीपल हैव जस्ट सेट अप दीज institute of excellence not only in Punjab but not only in India. These are considered as a temples of education in all over the world. All over the world people know the power of engineers who have passed on through these IITs. You know that we have a lot of CEOs who are passed out from these institutes. You know Sundar Pichai, you know all other great people who have been from IIT. और ये कब बनाए गए? 1951 में IIT खड़गपुर बन गया, just 3 years after independence. IIT बॉम्बे लगभग 11 साल इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये सारे टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन खड़े कर दिए थे, और ये सारे 15 years ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर बना दिए गए थे. They people are so intelligent. It is not only about engineering. They have also started building management institutes. IIM Kolkata 1961, IIM Ahmedabad 1961. Still, this is considered as one of the best management institute. आजादी के 15 साल के अंदर ये बना दिया गया, and still this is the first choice of all the students which we have passed out. So you can if I can take it further. So I consider Chandigarh as one of the most still manageable and beautiful city in our country. इसकी अगर हम बात करें तो this Chandigarh has been started just after the independence of India, and it was completed in 1960, and still this is considered as one of the beautiful and most manageable city in our country. So these are the vision of that people. They have contributed a lot in the development of nation. और आज हम 1 मिनट लगाते हैं ये बोलने के लिए कि किसी ने कुछ नहीं किया, but these figures tell a completely different story कि उन्होंने तो बहुत कुछ किया. जब हमारी बारी आई तो हमने फ्लाइट पकड़ी और भाग गए और ये बोल दिया कि किसी ने कुछ नहीं किया. So these are the figures which tell that we are blessed that we have a great leader who have taken care and make it possible that we reach at a stage where we can flourish, where we can learn, where we can compete with the world. This is not only one aspect. If you can consider green revolutions, earlier it was considered that कि जो इंडिया है ये भुखमरी और पॉवर्टी के साथ इक्वेट किया जाता था. No one can visualize that India can supply food grains to the world.
And now you know that कि अभी जब Ukraine war थी तो every country is looking towards India for the wheat supply because we are now the largest producer of lot of products, particularly in food chain. And we are not only feeding our people, but we are also exporting it to our country. So we are not feeding only our people, but we are also feeding the world. So these things are possible due to green revolution, and we have a great people like Dr. M.S. Swaminathan who are so visionary that who can see that the problems in current system and then completely change our irrigations and management of crops through innovation, and he revolutionized through the whole thing with green revolution. It is not only about this. Delhi metro system is considered as 10th largest metro system in the world, 16th largest in the ridership, and we have presented a very unique idea to the world to develop a low cost metro system. These are the great achievements. This is designed by E. Shri Dharan. He is considered as the Indian Engineer Service. He is considered as the father of Delhi Metro. He has also developed Konkan railway system. So his development and his contribution is great. So these are the actual heroes of our nation. So we should know about these people. We should celebrate those people. White Revolution. This make India a exporter of dairy products. This white revolution started in 1970s, and now it make Amul as one of the important model of working, and now it is replicated all over the world, and we have used all these things. So ये जो लोग हैं इन्होंने काफी एफर्ट लगा के एक ऐसा बेंचमार्क, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया वेयर वी कैन बिल्ड द थिंग्स. दिस पर्सन, कैन एनीवन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन? कोई बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? नंदन नीलेकणी. क्या किया था इन्होंने? Sir, Aadhaar database setup. First time he was in Infosys at that time. Then he was recruited from there. Yeah, so we have Nandan Nilekani, who is considered as the world's biggest biometric database. He built Aadhaar system, and now Aadhaar system is considered as the world's biggest biometric database over the world. And now we are using Aadhaar for making all kind of payments. अब जितनी भी सब्सिडी है वो डायरेक्टली पर्सन के अकाउंट में जाते हैं. यू हैव एवरीवन सेड दैट करप्शन इज वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ आवर नेशन, एंड थ्रू टेक्नोलॉजी he demonstrated that through technology we can solve the problem of corruption. And जितनी सब्सिडी है अब आज की डेट में उसमें जो करप्शन है it has been reduced or even fully eliminated. अब आपकी जो भी सब्सिडी है वो सीधे उसके अकाउंट में जाती है. तो जितनी भी एलपीजी सब्सिडी है, even आपके जो scholarships and they are directly given into your account. And this also make a base for setting up a UPI payment gateway. UPI payment gateway is one of the largest in the world where we are making digital transactions. No one can give a thought that कि India जो है वो digital payment भी कर सकता है. I am in Israel, so it is considered as one of the most high-tech country in the world. But still, I can say with proud the way we are using digital payments in India. It is not close to us. In India, everyone is using digital payments, and it is very common to use digital payment. But here, they don't have anything similar to UPIs, and even the people they don't have much apps like S where we can make payments seamlessly. So the technical development in India is immense, and these are the people who put a lot of effort to make this possible. And Nandan Nilekani is a passed out from IIT Bombay, and he built this particular system, and he first of all proposed this system theoretically in his book, which is considered as Imagining India. And then he took the courage to implement the whole system, and he was invited by our Prime Minister Dr. Manmohan Singh during that time, and he put the whole system in place by working from a rented flat in Bangalore without getting any salary in initial years. तो जब UAID की अभी अप्रूवल भी नहीं थी, जब इनको कोई जो प्रोजेक्ट था वो सैंक्शन भी नहीं हुआ था, but he know how important it is. So he built his team and he started working on that project, and he rolled out this system so fast that
Now it becomes world's largest biometric database in India. These are the great people. Everyone know these great leaders, and we are blessed that we have a great committed leaders with us that provide a base where we can grow and where we can flourish. So now I think that it's our turn to make to take this movement forward, because still we have a lot of challenges. I can keep on listing few other achievements where we can feel proud. You can see that these are the pictures of Commonwealth Games. We conducted Commonwealth Games. We are very good in now missiles and all these technology. India mission to Mars, everyone is familiar with this. It is considered as one of the most economical interplanetary missions. Even it is very important quote that कि हॉलीवुड में जितने में मूवी बनाई उतने में हमने पूरा मार्स मिशन कंप्लीट कर लिया. And now the image and the brand of ISRO is considered as par with NASA in order to launch low cost satellites. And even we are launching the satellites for other countries now. You all know about India's second mission, Chandrayaan. We have a Shakti mission where we have developed anti-satellite missile test and we have successfully completed it. We have a modern infrastructures in terms of airports, in terms of education institutes. So even if I take Thapur as a model base, so you can see the progress as an institute we have made. These are the initial pictures in 1948, where 1956. Actually, this institute was established in 1956. You can again think about just after 10 years of independence, we have this institute at our place. But during that time, this is the infrastructure. The student was staying in the tents during that time. तो ये हमारा उस समय का hostel है जो हमने उस समय एक open land में बनाया था और students tent में रहते थे. Now these are the excellent world-class infrastructure which we have in our campus. So you can easily understand the progress which we have made, and we cannot simply say no wherever we have to rate the progress which we have made so far. I think that now it's our turn that we should take this particular lead and develop a system where we can contribute into the overall development of our nation. Just give me a minute. I just want to open something different. Yeah, so I think that we have reached at a point where it's our responsibility to help or to do something for our motherland. It is not the responsibility of the rickshaw puller कि वो देश के बारे में सोचे. जो रिक्शा पुलर है उसकी तो सिर्फ बंदे की यही जिम्मेदारी है कि वो सुबह से लेके जो काम कर रहा है वो अपने परिवार का पेट पाल सके. तो कोई उसकी तरफ नहीं देखेगा जो आपने देश की प्रॉब्लम्स लिस्ट की हैं उसको सॉल्व करने के लिए. It is the responsibility of all of us who are sitting in a comfortable places, जिनको अपने जो रोजी रोटी है उसकी कोई चिंता नहीं है. We are blessed with the God that के हमें इस तरह की कोई समस्या नहीं है, and we can think in an open mind to solve the problems which our country have. It is just like that way. मान लो कोई किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, मान लो बांग्लादेश में कुछ इश्यूज है या अफगानिस्तान में कुछ इश्यूज है, तो अगर अफगानिस्तान में कोई इशू है तो उसके सोल्यूशन के लिए लोग बांग्लादेश की तरफ नहीं देखते, उसको सोल्यूशन के लिए यूएस की तरफ, बिकॉज दे आर द डेवलप्ड पीपल एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल, it is the responsibility of the developed country to come forward and solve the problem. So now it's our responsibility to come forward and to solve the problem which our society have. So as a student, you can think of multiple products. You can think of multiple products where you can solve these issues and solve these problems. So कईयों को अटेंडेंस की चिंता है, मुझे YouTube पे आंसर भेज रहे हैं, भी अटेंडेंस नहीं होगी क्या? So don't worry about attendance. Think big. छोटा सोच के अटेंडेंस नहीं रह जाओगे बस. So now I'm winding up this session. So it is a time to take
oath with me. ये गुरु दक्षिणा है. अब मैंने आपसे कुछ नहीं अभी तक मांगा. So now I request everyone. We have 41 participants. Maybe someone on YouTube. So please unmute yourself, everyone. Everyone, please unmute yourself. And please take this oath with me. This is the 7-point oath for students, which is given by Dr. APJ Abdul Kalam. And try to speak these words with me. जब ये oath को बोलना है, try to understand and absorb all these. Try to understand and absorb all these meanings, which carry a lot. So let's start with me. You can unmute yourself. I realize I realize I have to set a goal in my life I have I to have set to a set a goal life in my life to achieve the. To achieve the the goal, goal. I will I I will will acquire the knowledge. Acquire the knowledge. work hard, I will I will work work hard. hard. and when the When the problem occurs, I have to Defeat the problem and defeat the problem. defeat the problem and succeed. I have I have to defeat the problem and As a youth of my as a my nation, nation. I will work and work Work and work success in all my Work tasks with and courage. success of others. And enjoy the success success in all my tasks. Enjoy achieve success in all my tasks. Enjoy the success of others. I shall always keep myself, I shall I shall always always keep myself, Keep my myself, my home, surroundings, surroundings, clean and my tidy. neighborhood and environment clean and tidy. right. an environment clean and tidy. I realize I Is realize righteousness righteousness in the heart goodness in the beauty in the heart leads to character, beauty in the character. leads to beauty in the character, Beauty in the character harmony in the in the home, character brings harmony, brings harmony in the home, harmony in the home, order in the nation, order in the nation, order in the nation, and order in the. peace in the world. This point is very important. I wish I everyone will should lead adopt that point. a life Work free hard. from all corruption and will set an example In his life, during my home to all adopt corruption, All corruption, and will set an example for others, including my home, to adopt the righteous way of life. the righteous way of life. So I again request you to repeat this point again. I will lead an honest life We lead an honest corruption from all corruption, from all corruption and set an example for others, and set an example in my home to adopt the righteous way of life. for others, including my home, to adopt the righteous way of life. I will light the lamp of knowledge I in the will light nation, the lamp of knowledge Knowledge in the in nation, the nation and it will remains lit forever. ensure that it will live I forever. realize I realize what whatever I I do the do best I am what I do towards realizing the develop vision of developing India 2020. towards realizing the version of India 2020. Jai Hind. Jai Hind. yeah, Jai Hind. Please keep working in this direction and learn all the concepts and also help your friends to move in good directions and keep this knowledge spread from one person to another. If anyone want to say something, you can unmute yourself and this is your time. So now I want to listen to you. So this is your time. Anyone can unmute and please share your ideas, what you have in your mind. It's important to share your ideas. Yes, please don't hesitate.
Sir, I would like to know your thoughts on brain drain, like youth, when we are having so many good institutes in India and getting knowledge from here, and when the time is there to serve our country, we are going abroad, settling there. Initially, we go there just to gain knowledge and experience. Then most of us, like we remain there and settle there. So we are not actually paying back to our country. So what do you feel like? How the youth should think in that way, so that we should come back and serve our country? I think that in modern world, distance is not matter. It is all about your thought process, which carry the whole difference. तो अगर आप कुछ return back करना चाहते हैं, first of all, it's very important to go out and see the world, because if you go out, you will expand your comfort zone. World is now a global village, so it's better that if you see how the people are working, it result into your growth. तो बाहर जाना कोई गलत नहीं है. अब now the question is that कि जो brain drain हो रहा है, हम वापस contribute नहीं कर पा रहे. So I think that it is not majorly based on the distance. It is based on your thought process. तो अगर आपके thought में कुछ है, करने की जज्बा है, तो मैटर नहीं करता. आप कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट आई एम सिटिंग एट इजराइल. पिछले 2 साल से मैं यहीं पे हूँ. बट आई एम डूइंग माई व्हाट आई कैन डू फॉर माई कंट्री, फॉर माई नेशन, एंड टू गिव बैक टू द सोसाइटी. सो सेम वे एनीवन कैन डू इट. सो आज की डेट में जो डिस्टेंस है वो मुझे नहीं लगता इतनी मैटर करती है. इट इज मोर अबाउट द थॉट प्रोसेस, which is important, that yes, I have to do something for my people who are back there, and there are multiple ways to find that. Of course, if you can come back and serve, it is always great. But if you can't come back, then again still you have ample opportunities to give back to the people, and you can start a startup in your village. You can teach people, you can do multiple things. You can train people back at home, and you can pass the technology or learning to back home. So I think that it is more about the character than about the distance. So कहीं पे भी रह के आप अपने देश का नाम और काम कर सकते हैं. Distance does not matter in modern world. I think this way. But Yes, thank you. Yes, anyone else? So this is my first online course, and I am feeling very amazing that this is the thing that I have done, and I haven't left any session, and be on time, and I was doing what I should do, and I am feeling very proud about it now. अनिल जी, आप कहाँ से हैं? सर डेराबस्सी पंजाब. और कहाँ पढ़ते हैं? सर स्वाइट स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट बनोड़. फर्स्ट ईयर में? क्या सर? किस ईयर में हो आप? सर फर्स्ट ईयर. हाँ, बहुत सही है. गुड, गॉड ब्लेस यू. सो तुमने तो बहुत अच्छा, मतलब यू कम्पीटेड इन द कंपटीशन आल्सो. कई बार आप उसमें टॉप पे भी रहे हो. तो आप जैसे बच्चे एक्चुअली एक एग्जाम्पल है और हमारे लिए मोटिवेशन है कि yes, we have to do lot of things, and this is good that this is a message that actually institute does not matter. कहीं से बैठ के भी आप अच्छा कर सकते हैं. it is सिर्फ आपके अंदर जज्बा और कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है. and distance does not matter. even resources आजकल इतने हैं सबके पास, तो कोई भी कहीं से कुछ भी सीख सकता है. it is more about the character and attitude, and you have shown, and I wish you all the best, and I think that you will be continuing in this direction, and you will become an amazing person and an engineer in future. Thank you, sir. Thanks a lot. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं ना? सर वो पेरेंट्स मतलब एक मेरे फादर लाइब्रेरियन है और मदर हाउस. गुड गुड. इससे पहले किसने क्वेश्चन पूछा था? आई वांट टू नो अबाउट कि वो कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मैं नाम भूल गया. Sir, myself Rajinder Kaur, and I am from IIT Delhi. You are from IIT Delhi? Yes, I am working as a research scientist here, women scientist, and
I am basically from biotechnology background, and I'm so grateful to you. Like, you conducted this course, and initially I was skeptical. Like, really, I will be able to learn something about machine learning or something. So because people think like bio people, they cannot understand all these things. So my husband is chemical engineer, so he's like, oh, you are not going to get this. You are just wasting your time. So I was like, it's okay, still, let me try. So he was like surprised, like I am attending the last course today. So really thankful, sir, because I also didn't expect that it will be so interesting. And you are such a wonderful teacher, really, really. For a bio people, for a biotechnology student background, you have made things so easy and so beautifully understand. I have everything like it was an amazing experience. Thank you, sir. Thank you, Rajinder. आप कहाँ से हैं वैसे? So basically, I'm from Punjab. All my education, BSc, MSc, I did from Guru Nanak Dev University, Amritsar. Then I did my PhD in biotechnology from in National Center for Cell Science, Pune, and then I joined IIT as a research scientist. तो मैं भी अमृतसर से हूँ. I started my career from DAV College, Amritsar, from 1998 to 2004. और मेरे in-laws भी अमृतसर से हैं. And I actually belong to Kadia, which is near Amritsar district, Gurdaspur. Wow, sir. Thank you, sir. God bless you. Thank you. Yes, anyone else? Please, it's your time. Yes, sir. Yeah. Vanshika this side. I just want to say that like I am someone who learns best when the like teacher is right in front of me and teaching. So online learning has like never been so fruitful for me. I was also in the IIT Bao course. So that was the time, especially in your sessions, I found, most helpful. Actually, I didn't feel that distance within, teacher is not in front of me. I don't know why it is like that. ऐसा होना नहीं चाहिए, but still, I feel कि जब teacher सामने होता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है. So that was not the case with you. So I just wanted to, I really like your teaching style. So I just wanted to thank you once more. And especially like, I don't know if it is with everybody else, like all my childhood teachers, like who taught me to write, who taught me to read, my kindergarten teachers are always closest to my heart. So somehow you are, when I think of those teachers, you are coming into my mind with them. So this is like, especially in terms of machine learning and stuff. So yes, I would say that you, the sessions have been really helpful, and especially in the online mode. So that's all. I just wanted to thank you for your teaching. Thank you, Vanshika, for great words. And yes, of course, I personally feel that this online teaching is great, and this gives us a lot of opportunity. I am great fan of this online teaching. And actually, since the last 2 years, I am at Israel, and I'm missing my students. So with online teaching, I am able to contribute and I am able to talk with them, and I always enjoy all these sessions. And even I want to tell you कि अभी मेरे जो मम्मा है वो retired है, school teacher retired है. Okay. तो अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो वो लेटे रहते थे. तो अभी हमने उनको बोला कि आप जो अपने पोती पोते हैं उनको हिंदी और पंजाबी पढ़ाओ. तो आजकल सुबह रोज 10 बजे से मॉर्निंग में 1 घंटे की क्लास लेते हैं, और शी इज टीचिंग ऑल जो भी उनके पोती पोते हैं अलग अलग जगह से, इवन जो उनके सिस्टर्स के बच्चे हैं. तो नाउ शी हैड 10 स्टूडेंट, और वो बहुत अच्छा हिंदी और उनको डिक्टेशंस कराते हैं और पंजाबी सिखा रहे हैं. एंड शी इज एंजॉयिंग दैट, एंड शी बिकम एंगेज्ड. एंड जो टीचर है उसको जब मिल जाते हैं तो शी फील वेरी हैप्पी. और जो वो भी कोर्स चल रहा है मॉर्निंग में वो पढ़ाते हैं, तो it's amazing. So of course the distance does not matter, and if you have the skills and if you have the commitment, so the technology is so smooth, and you can learn everything so smoothly. Yeah, but actually I think that it also requires commitment from the student side more as teacher to chalo aake padha. Exactly. But it requires a commitment from the student that every time you have to join the sessions. But normally we feel that record to hai ye baad mein dekh lenge, kar lenge, then it will not make any sense. So if you are regular, then I feel that the job can be delivered in the same way. Even I think that job can be delivered in much better way
through online platform, because you can share your screen so smoothly. You can show a lot of things to the students and you can interact with them. But the important thing is that yes, it requires a little bit more commitment from teacher as well as student. Yes, exactly. Thank you. Thank you. Thank you so Yes, much. next, anyone, please. This is your time. Good evening, sir. Good evening, Preeti. सर कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कहाँ से हैं? सर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स आप लोगों की तरफ से लिंक आया था, आई एम एक्चुअली टीचिंग, सो मैंने ये अपने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था सो दैट दे कैन गेन समथिंग, and I just missed the first class that it was on Saturday, then the class was conducted on Sunday, and मैंने सिर्फ इसलिए अटेंड किया था कि मैं देखूं कि एज अ गुड टीचर आई एम कंसर्न अबाउट माय स्टूडेंट दैट दे हैव अटेंडेड द क्लास और नॉट, बिकॉज इट वाज फ्रॉम थापर, and we know that we from Thapar we get good teachers or great teachers. So I just joined the course only on Sunday to see that my students are learning or not. But after your first session, like it was knowledgeable as well. It was very easy to understand certain things, very 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 easy. So I asked them, did you join the session? Yes ma'am, आपने भी किया था join, हमने देखा था. So the things went like, हाँ मैं अगला भी करूँगी, हाँ मैम हम भी करेंगे. The things went like this, and it was very difficult to attend a session because we get freeze on Sundays only, and to attend a session at 6 p.m. was very difficult. We have to go to the market and same things we have to do on Sundays. But I don't know why you was teaching with great enthusiasm. I don't know how it became possible for me to attend the classes on daily purpose. I don't know my students are attending or not, but I have completed the course, and even in my department I have tell them that I have an experience to learn from Prateek sir, and हमने उनकी बुक भी देखी है जो पब्लिश होने वाली ऑक्सफोर्ड में. It was very great experience, and then we decided that in the next session we will be teaching them Python and machine learning side by side, so that जो मैंने लर्न किया है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में डिपार्टमेंट में, हम उनको भी दे पाए जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया. और आई एम always forcing them to join your course. And there is one nephew, he is studying in CGC Landra. He told me that बुआ मैं क्या करूँ, मैंने प्रतीक सर की क्लास ज्वाइन करूँ. अच्छा, मैंने वो PLSQL वाली क्लास ज्वाइन करी हुई है उनकी. So I don't know, sir, your teaching very good or your interaction with is very friendly or comfortable, sir. Everyone is loving to learn from you, sir. Even I have my friends, they are from PCS. I have even send them the link to them कि आप कहीं से भी ज्वाइन करो, आपको समझ में आ जाएगा. बोलते आधी क्लासेस तो चलेगी, मैंने कहा नहीं आप ज्वाइन करो. And they always, everyone is praising you because you teach very well, and it gives me a motivation to teach my students very well. I was teaching compiler, and somehow compiler is a very difficult subject to teach always, other subject other than other subjects. But I don't know, from you I was getting so much more, so I was just preparing the subject in a very good way so that I can give them the best thing. प्रीति आप कहाँ पढ़ाते हैं? सर मैं यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर लालू मोहाली में है सर. हाँ जी, गुड गुड. So बढ़िया है. तो I wish that you will be conducting a similar kind of course at your institute and just make a practice that in summer or winter or anytime, anywhere you find time. So just spread this message and train maximum number of students on this technology. Definitely, sir. Even our dean is doing her PhD, so she was needed some help in the machine learning. So I am helping her out with the things so that she can train her model very well. She's from civil engineering department, but she wanted to have someone who can help in the machine learning things. Yeah. Machine development. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Next, please. Hello, sir. Sachin this side. We have talked earlier also. I'm a Thapar alumni, and it's very great to see you after 11 years. मतलब 10 साल के बाद आपका कोर्स ज्वाइन किया है. नॉट कि ऐसी, क्योंकि ऐसा था कि आपके तो पुराने कोर्सेज में आज भी पढ़ता हूँ. Like I work for a company in the leadership team, and I myself head the business analytic division of the company.
तो उसमें सर जैसे अभी ब्रेन ड्रेन का भी क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन रेज हुआ था, तो आई हैव बीन टू यूके फ्रॉम माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड सो अगेन दैट वो माइंडसेट वाला खेल तो है ही है कि लाइक इफ द ऑफिस देयर इज फ्रॉम 9 to 5, तो 4:59 पे पीपल यूज्ड टू गेट अप एंड दे यूज्ड टू गो कैच द बस एंड ट्रेन। लेकिन अगर 5 बजे के बाद अगर पूरे फ्लोर पे डेजर्ट भी मार के देते तो हम इंडियंस वी वर द पीपल हु यूज्ड टू सिट देयर 6 o'clock 6:30, और क्योंकि आई वाज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग माय टीम देयर, सो आई यूज्ड टू गेट अ कॉल कि यार हम लोग है ना जा रहे हैं थोड़ा पार्टी करने, तो बैठ जा 6:30 बजे तक बैठ जा। तो क्या ठीक है। तो लाइक वंस वन ऑफ माय associate director, he was sitting next to me, he said ki why are you sitting till 6:30? There is some work. What work? Your time was from 9 to 5, so why are you sitting till 6:30? What's the point in sitting till 6:30? I didn't have any answer to that. So next day से मैं 5 बजे निकलना शुरू हो गया कि ठीक है मैं भी I will follow them. And I got a call at around 6 like 11:30 India time. Where are you? From India. Yeah, I'm at my home. कहते नहीं यार वो काम खत्म करना था, तुमने काम नहीं खत्म किया अभी तक। तो मैं क्या कोई नहीं सर, मैं क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ही है लाइक आपको शायद याद होगा नहीं कि व्हेन वी वर इन आवर फाइनल इयर्स यू actually give a pep talk to us regarding that thing ki even if you are working for Google or Amazon, you will be recognized as highly paid employee of that company, if you are still remembering that thing कि आप ये नहीं होगा कि वो कंपनी आपकी है, लाइक हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ गूगल और वो सब कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर आपने बोला था कि इफ यू आर सिटिंग कि अगर आप पास आउट होके जाते हैं तो इट्स नॉट कि आपके पास एक ऑफर होना चाहिए, यू हैव 4 or 5 ऑफर्स, यू शुड चूज द कंपनी यू वांट टू वर्क विद, नॉट दे शुड चूज यू। सो when I left that company and when I joined another company, I joined that company as a normal employee, as a business analyst. I'm a programmer by profession, but मेरे को बीच में business analyst का लगा कि मैं कर सकता तो I'm doing it. And within 2 years they asked me to head the division कि तुम head करो division इसको। So I said okay fine. अब the thing which happened to me in my past, in my previous organization, I make sure कि वो किसी और के साथ ना हो। Like if a person is feeling something, if he or she is feeling any issues from home or working from home, and there was a issue regarding online classes ka hai, so I did my post graduation from IMT Ghaziabad in business analytics, which included all the exams plus a self coded project in Python as well. So I was able to do that also. But कहीं ना कहीं सर देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे ऊपर है। हम तो आपके फैन हैं ही, मतलब डाई हार्ड फैन एक अलग चीज होती है, बट एक उससे ऊपर अगर फैन कैटेगरी है तो हम लोग हैं। द वे यू हैव टीच्ड अस इन आवर इनिशियल डेज, दैट हैज पेव्ड द वे फॉर एन इनिशियल फाउंडेशन एंड वी आर जस्ट बिल्डिंग ओवर दैट, चाहे वो डेटाबेसेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट या अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बुर्ज खलीफा भी बना सकते हैं सर उसके ऊपर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, please. Anyone else? It's your time. So please share your ideas. Don't hesitate. Please speak. Actually, बोलना भी बहुत जरूरी है. It gives you confidence. So that is equally important in life. Please share your views on the course, how you feel, how you want to use this knowledge. Yes, anyone else? So good. Yeah, anyone else who want to speak, please, still we have time. Good evening, sir. Good evening. Sir Surkhab Shari this side. Yeah. So, from Gurdaspur here. Your district, sir. That's good. तो गुरदासपुर में कहाँ से हैं? What's it, sorry? गुरदासपुर में आप कहाँ से हैं? The main city. Okay. So what you are doing? Sir, I'm I'm teaching from last 7 years in some degree college in Gurdaspur, and I'm also pursuing my PhD, sir, from Beyond University. Good, good.
So what was your experience? इट वाज वेरी गुड. एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं था सर आपका कोर्स अटेंड करूंगी लाइफ में. आपकी बुक्स जो डेटाबेस मैनेजमेंट की डीबीएमएस की बुक्स है वो अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा रेफर करती हूँ. आई थॉट कि वो आपकी जो डीबीएमएस की बुक है वो बहुत हेल्प करती है बच्चों को भी और मेरे को भी सीखने के लिए. एंड आई वाज सो एक्साइटेड इनिशियली और काफी अच्छा लगा मतलब आपका कोर्स अटेंड करके. अभी भी मैं नर्वस हूँ आपसे बात करते टाइम. So it was so wonderful, sir. Experience with you, sir. Your teaching skills or your teaching, मतलब आपका पढ़ाने का तरीका, like it was very good. Thank you so much, sir. It was a very knowledgeable session. Thank you so. Thanks a lot, sir. तो मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है पार्टिसिपेट किया है, सो दे कैन रन दिस कोर्स एट देयर ओन इंस्टीट्यूट और आप अपने बच्चों को ये कोर्स करा सके. इट विल बी गुड. और you can make a practice that in every summer or winter or whenever they have time, so you can introduce this course. And even you can if you are in some board of study, you can introduce put an effort to introduce this course in other branches, like you can have BCA, MCA and all those things where we can introduce this course also. And of course and it's very important to create a simplified content, and I am working right now on machine learning book, so most probably this book will be available by the end of this year. We are everything has been covered. I put best effort to make it simple and detailed so that all the things will be covered to the students in a best possible way. And now I am developing presentation and video sessions also on these courses, so I hope it will be useful. Yeah, thank you. Anyone else? So thanks for your message. Actually, this is very important. So as a personally, अगर मैं बात करूँ तो actually it is very tough to get motivation to do these type of courses and all those things. So but your comments and all those thoughts is equally very important, and this give a motivation to continue this effort, because everything require a commitment also कि नहीं हर Sunday को time निकालना and I have to do this session. So I hope that we will be having a lot more courses in the near future, and please share your ideas how we can make it these courses little bit more effective in course completion, because still the course completion is only 10%. We want to improve that number. So this is the thing which I always want to have at least 50% course completion. लेकिन अभी तक हम 10% से ज़्यादा मैं किसी भी कोर्स में नॉर्मली अचीव नहीं कर पाया हूँ. और आप इसके ऊपर मुझे थॉट प्रोसेस शेयर कीजिए. एंड वन थिंग आई आल्सो वांट दैट कि वी हैव ए वेरी गुड टीम. अगर आप हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप देखें तो वी हैव ए मोर देन 100 or 1000 participants. So I feel that कि this group can be used in a much effective way. हम उससे एक और क्लोज ग्रुप बना सकते हैं. At least we have 100 students जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है. So if you can create a separate group of these 100 students, and then we can these 100 students can make some teams and work on some projects, some competitions. So this will be great. So I want that these things should happen. तो मेरा अब आपसे सजेशन है कि please some of you please take the lead कि आप इस ग्रुप को एक जो हमारे पास टोटल 1000 बच्चों का ग्रुप है उसमें से एक टारगेटेड और एक स्मॉल ग्रुप बनाइए जिन्होंने एक्चुअली ये कोर्स कंप्लीट किया है. एंड देन share different ideas where you can collaborate with each other. We have students from different colleges, from different backgrounds. We have a lot of teachers, we have a lot of students from different branches. So हम interdisciplinary area पे काम कर सकते हैं. Teachers आगे lead ले सकते हैं. We have a lot of faculty members. So I want all these teachers to take the lead and float some projects where these students can further work and enrich their skills. तो बहुत चीजें पॉसिबल है. प्लीज आप मुझे मेरी पर्सनल विंडो पे या इस ग्रुप के ऊपर
अपने थॉट शेयर कीजिए so that we can keep this moment, and we should achieve lot more than what we are achieving at present. I think that कि इसमें बहुत सारा potential है, and we are just achieving 5% or maybe 10 to 20% what we can achieve. Still बहुत कुछ हम इस ग्रुप से कर सकते हैं जो अभी हम नहीं कर रहे, जिसके लिए जैसे मैंने बोला कि टीचर्स हैं, they can take the lead, professionals and they can take the lead. जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, वो आप फ्लोट कर सकते हैं. एक क्लोज ग्रुप बनाइए, बच्चों की टीम बना के कुछ कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, हैकाथॉन्स में जाइए, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट कि एक ही जो है वो लीड करेगा. Everyone can lead, and I want you to take the lead and run that particular shows. And maybe next time now you have learned that how easy is to float a course. किसी को भी बड़ी आसानी से पढ़ाया जा सकता है. So just create a WhatsApp group, share with people, and then you have a group, and then you can start teaching. So please आप भी अपने जो, और पढ़ाना सबसे अच्छा है अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए. तो मेरा बच्चों से, स्टूडेंट से, टीचर से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज टीच एटलीस्ट वन सच कोर्स टू योर ग्रुप. अपनी कम्युनिटी में एटलीस्ट एक कोर्स ऐसा रन करें और जिसमें आप अपने ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको टीच करें. नॉट ओनली मशीन लर्निंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट आता है, इवन आप मैथ, फिजिक्स, साइंस, हिंदी, पंजाबी कुछ भी पढ़ा सकते हैं. बट ट्राई टू मेक ए हैबिट दैट कि सैटरडे संडे आपने 1 घंटा निकालना है और जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आपको रन करना है. और आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंपल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए कि आई एम फ्लोटिंग दिस कोर्स, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीवन कैन ज्वाइन, एंड यू विल फाइंड दैट कि एटलीस्ट 100 people will join from your कॉन्टैक्ट बुक. तो लेटर ऑन ऑटोमेटिकली ये नंबर ग्रो करेगा. जब इंडिया में हम कोई भी काम करते हैं तो जो चीजें ओनली द कमिटमेंट व्हिच मैटर्स. सो हमें लगे रहना पड़ता है, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं. सो लगे रहिए, शुरू एक कोर्स कीजिए और देन शेयर योर व्यूज विद मी एंड कीप दिस मूवमेंट. सो आई वांट यू हैव, वी स्टिल हैव 31 people who are live. तो मैं चाहता हूँ कि 31 आप नए कोर्सेज अपने लेवल पे फ्लो कीजिए, सैटरडे संडे 1 घंटा निकाल दीजिए, और जो भी आपको आता है. आई नो दैट यू कैन टीच अ लॉट, एंड टीचिंग इज one of the best thing which we can contribute to our society, and it is not only machine learning. आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ, और कोई हॉबीज में भी आप कर सकते हैं. तो जस्ट क्रिएट ए ग्रुप एंड स्टार्ट टीचिंग एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन दैट डायरेक्शन. एंड आई कैन मेक यू श्योर दैट जब आप टीच करते हैं, आप 1 घंटे का सेशन लगाएंगे, यू विल फील फुलफिल्ड, you will feel lot confidence, and particularly if you are a student, you will learn lot of new things. जब आप आगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे. तो अपने जूनियर्स के लिए कोर्स शुरू कीजिए, अपने स्कूल के लिए कोर्स शुरू कीजिए. एंड आज की डेट में तो इतना सोशल मीडिया है, आप बड़ी अच्छी तरह से ये मैसेज आगे फ्लोट कर सकते हैं. जस्ट क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आस्क द पीपल टू रजिस्टर इन दैट, एंड देन जैसे हमने कोर्स शुरू किया था, यू नो द होल प्रोसीजर, तो आप उसमें से अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं एंड ट्राई टू फाइंड इनोवेशन so that जो आपका कोर्स कंप्लीशन रेट है वो बढ़ सके, स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहे. और 2-3 हफ्ते का कोर्स आप शुरू करके देखिए और जस्ट कीप डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, एंड दिस इज वन वे थ्रू व्हिच एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट. एंड आई फील दैट वी हैव बिलियंस ऑफ पीपल इन आवर नेशन, एंड अगर आप थोड़ा सा भी देखें तो हर कोई आजकल बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है, चाहे वो गाँव का है, चाहे वो कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस में कर रहा है. तो लेकिन जो बच्चे हैं उनको सीखने के लिए जो सिंपल मटेरियल है वो नहीं मिल रहा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, लेकिन स्टिल जो कनेक्शन चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए एक गांव के बच्चे को, वो हम बड़े इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन तक पहुंच सकते हैं. सो इफ यू कैन रीच टू देम एंड इफ यू कैन डिलीवर द कंटेंट टू देम इन द वे दे वांट, इट विल बी अ ग्रेट सर्विस. तो आप कुछ भी अपना एक्सपर्टाइज, कोई भी एरिया चूज कीजिए और इसके ऊपर हम ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं. And if at any point you need my help, I am always available. अगर आप कोई कोर्स शुरू कर रहे हैं और उसमें आप मुझे 1 सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए बुलाना चाहते हैं, I will be happy to contribute. That will be the thing I can help. And there are other multiple ways where we can think and we can work together to keep this movement going on. And
thanks for all your support and good words and blessings, and it is all due to students that we are able to do this activity. और इवन पर्सनल फ्रंट पे भी तो मतलब मेरे लिए जो स्टूडेंट्स ने किया है, I don't have any words to thanks to all my students. Some of the students know it, but of course this is very little which I am doing what you have done for me, for our family. So we always feel blessed that we have wonderful students, and this give us a opportunity to contribute little bit what we can do. Thanks, and please keep in contact, and कुछ भी आपका आइडिया है, कुछ भी है तो बात कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कीप कंटिन्यूइंग वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. तो कुछ नया कोर्स शुरू होगा तो ऑफ कोर्स आई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू पीपल, एंड देन वी विल डू समथिंग डिफरेंट. एंड इवन ऑफ कोर्स आई विल बी प्लानिंग to start a new course on machine learning soon, and please share this information with your friends and your colleagues so that we can have more number of students who require this training. Thank you. God bless you. If anyone want to conclude, you can. Otherwise, we will be closing the meeting. Yes. तो बहुत टाइम ले लिया आपका मैंने आज. Thanks. God bless you.